So in this lecture, we will discuss about the strength of acids. So you can say the strength of acids. Strong acid is one that ionizes completely in aqueous solutions and gives a higher concentration of hydrogen ions. A strong acid is strong electrolyte. For example, hydrochloric acid is a strong acid because when hydrochloric acid is added into water, all the molecules of HCl are dissociated completely into H ions and chloride ions. So we can say HCl dissociates into H plus and Cl minus. So we can say that strong acid क्या चीज़ है? Strong acid वो होता है जो completely आयनाइज होता है एक्वस सोल्यूशन में, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो किसी completely आयनाइज होता है एक्वस सोल्यूशन में, और फिर उसके नतीजे में क्या होता है, यानी उसके नतीजे में देता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है. तो यानी वो एसिड जो एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज होता है और उसके नतीजे में एच आयंस की जो ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है. यानी क्या मतलब है इसका मतलब ये कि ये अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि अगर हम HCl को पानी में डाल लें, HCl की यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हम इसको पानी में ऐड करें तो ये completely जो ना डिसोसिएट हो जाता है into H ions and Cl minus ions. So when HCl is put in water, it dissociate into H ions and Cl minus ions. You can say so. This is because the HCl is a stronger acid. तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर पानी में डिसोसिएट होकर H आयन और Cl आयन बनाता है, यानी इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. जो मजीद जो स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल्स हैं, सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिकल फार्मूला इज HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, sulfuric acid H2SO4, pyrochloric acid HClO4. So these are the strong acids, you can say, and these are the formula given. So next one is, you can say, weak acid. The acid which is not completely dissociate in aqueous solutions and gives lower concentration of H ions are called weak acids. यानी weak acids क्या है? Weak acid वो एसिड होता है जो एक्वियस सोल्यूशन में मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट नहीं होता, और अगर यानी मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट नहीं होता बल्कि थोड़ी मिकदार में डिसोसिएट होता है और उसके नतीजे में थोड़ी मिकदार में H आयन प्रोड्यूस करता है, यानी ये स्मॉल concentration of H ion against lower concentration of H ion. So the acid which don't completely dissociate in aqueous solution and gives lower concentration of H ions are called weak acids. For example, example is the acetic acid CH3COOH. That is a weak acid because when acetic acid is added into water, very few molecules of acetic acid are dissociated. So this is the acetic acid. We dissociate into acetate ion plus H ion. So we can say that the acetic acid partially dissociate into acetate ion and H ions. So, but this produces lower concentration of H ions because it is a weak acid and it dissociate in aqueous solution at low level. You can say low quantity. So these are the example of some weak acids. This is a nitrous acid HNO2, sulfurous acid H2SO3, carbonic acid this is H2CO3, phosphoric acid H3PO4, propionic acid you can say
Propanoic acid, this is C2H5O, COOH. So you can say these are the example of weaker acids. So you can say that next one is the strength of bases. Strength of bases. So the strong bases, the bases which completely dissociate in aqueous solutions and give a high concentration of OH ions are called strong bases. यानी strong bases क्या है? वो bases जो aqueous solution में मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाते हैं और उसके नतीजे में हायर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो वो कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। तो ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। They are strong bases which produces OH ion in aqueous solution. Now, weak bases, the bases which do not completely dissociate in aqueous solution and gives a lower concentration of OH ions are called weak bases. यानी वो bases जो completely dissociate नहीं होती aqueous solution में और lower concentration of OH ion प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं वीक बेसिस। मिसाल के तौर पर एमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH3। तो दीज आर वीक बेसिस। Now we can say, so given some interesting facts, strong acids like hydrochloric acid, hydrobromic acid, you can say HCl and HBr, nitric acid HNO3, sulfuric acid H2SO4, phosphoric acid H3PO4, carbonic acid H2CO3, etc. are known as a mineral acids. So these are mineral acids, and some acids like formic acid, acetic acid, and phosphoric acids are called organic acids. So we can say that these are mineral acids. These all are mineral acids. HCl, HBr, HNO3, and H2SO4. You can say H3PO4 and carbonic acids are known as mineral acids. So these are mineral acids. While that of formic acids, acetic acid, you can say, and phosphoric acids, propionic acid, you can say, these are called organic acids. तो इसको हम कहेंगे organic acids. So here is given some society, technology and science, explain process of etching and art and industry. So you can say that etching is the process of using strong acid to cut the unprotected part of the metal or glass surface to create a design or a image for by cutting. Carving into flat surface. So we can say in this process of etching, a metal or a glass is converted with the wax, is covered with wax and which is resistant to acid. The artist then sketches of the ground with the pointed etching needles where the artist wants a line to appear on the finished piece, so exposing that part of the metal or glass. The blade is then dipped on a bath of an acid. The acid beats into the blade where it is exposed, leaving behind
line sunk into the plate. The remaining ground is then cleaned off the plate. The plate is linked all. The plate is linked all over, and then the ink is wiped off the surface, leaving only the ink in the each lines. तो ये बताया कि जो प्रोसेस ऑफ इचिंग है वो किस तरह होता है आर्ट इंडस्ट्री में। तो ये कह रहे हैं कि इचिंग जो है ये एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है, एक तरीक़ेकार है जो जिसमें जो है स्ट्रॉन्ग एसिड को इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो मेटल की जो मेटल का जो अनप्रोटेक्टेड पार्ट होता है उसको कट करने के लिए मेटल का या ग्लास का जो है ना ग्लास सरफेस का, तो उस पर डिज़ाइन जो है ना या तस्वीर बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए उसको फिर यानी उसके ऊपर उसको काट लिया जाता है ताकि उसके ऊपर एक जो है डिज़ाइन बना दिया जाए, तस्वीर बना दी जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, यानी इचिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड को इस्तेमाल किया जाता है, यानी मेटल का जो सरफेस है उसको कट लगाने के लिए ताकि उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बना दिया जाए। तो उसके लिए जो है ना फिर स्ट्रॉन्ग एसिड को इस्तेमाल किया जाता है और इस फिनोमेना को कहते हैं इचिंग। तो इचिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड टू कट द अनप्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ द मेटल। इचिंग प्रोसेस है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज़ किया जाता है ताकि जो अनप्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ मेटल है उसको कट लगाया जाए, या जो ग्लास सरफेस है यानी मेटल सरफेस या ग्लास सरफेस को कट लगाया जाए टू क्रिएट डिज़ाइन को बनाने के लिए, और यानी इसको फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज़ करते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ इचिंग अ मेटल और ग्लास इज कवर्ड विद वैक्स। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, मेटल ग्लास को वैक्स के जरिए से कवर किया जाता है। मेटल या ग्लास सरफेस को के ऊपर वैक्स चला दिया जाता है क्योंकि जो वैक्स है वो रेजिस्टेंट टू एसिड है, उसके ऊपर एसिड का असर नहीं होता। वैक्स को मेटल के ऊपर या ग्लास के ऊपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसके ऊपर एसिड का असर नहीं होता। उसके बाद आर्टिस्ट क्या करते हैं, उस सरफेस को स्क्रैच करते हैं, यानी आर्टिस्ट क्या करते हैं फिर वो ग्राउंड्स को जो है स्क्रैच करते हैं विद पॉइंटेड इचिंग, यानी उसमें एक ग्राउंड जो होता है ना उसको स्क्रैच करते हैं, यानी ग्राउंड को जो है ना एक नीडल के जरिए से उसको स्क्रैच करते हैं ताकि वो लाइन जो है ना उसको फिनिश जो पीस होता है उसके ऊपर बन जाए। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो मेटल का जो सरफेस होता है जिसके ऊपर यानी जो एक्सपोज उसको किया जाता है मेटल का या ग्लास का जो सरफेस होता है, तो उस प्लेट जो मेटल का प्लेट होता है ग्लास का उसको फिर यानी एसिड में डिप किया जाता है। तो एसिड फिर क्या करता है, उस प्लेट को जो ना काटे जहाँ पे यानी जो अनकवर्ड सरफेस होता है जिसको प्रवेश लगा नहीं होता उसको बाइट करता है एसिड। तो यानी जिस मेटल के सरफेस के ऊपर वैक्स लगा नहीं होता तो तेजाब उसके ऊपर असर करके उसको काट लेता है। तो फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर लाइन छोड़ देता है, लिविंग बिहाइंड लाइंस संक इन द प्लेट। तो यानी उस जो मेटल के ऊपर सरफेस के ऊपर जहाँ पे वैक्स लगा नहीं होता उसके ऊपर तेजाब असर करता है तो उसके ऊपर लाइन छोड़ देता है, और फिर जो रिमेनिंग ग्राउंड होता है उसको फिर क्या करते हैं, साफ किया जाता है, और द प्लेट इज इनक्ड उसके ऊपर फिर पेंट इनको लगा दिया जाता है, और फिर उसको साफ किया जाता है, उसकी सरफेस को जो लिविंग ओनली
द इंक इन दी एच लाइन, यानी उस जो ईच लाइन जो होता है जिसके ऊपर तेजाब ने असर किया होता है उसके ऊपर सिर्फ स्याही को छोड़ देते, बाकी को साफ कर देते हैं, बाकी को वो साफ कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, द प्लेट इज देन पुट इन ए प्रिंटिंग प्रेस टुगेदर विद ए शीट ऑफ पेपर। तो वो जो मेटल की जो प्लेट या ग्लास की जो प्लेट होती है उसको फिर ना प्रिंटिंग प्रेस में जो है ना डाला जाता है, यानी शीट ऑफ पेपर समेत। तो फिर क्या करते हैं, द पेपर क्या करते हैं, पेपर पिक्स अप द इंक फ्रॉम द ईच लाइन। जो पेपर होता है वो फिर वो उसके ऊपर वो जो इंक लगा होता है उसके निशान आ जाते हैं, उसके ऊपर प्रिंट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को रिपीटेड मेनी टाइम्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर क्वालिटी वर्क हो। इस प्रोसेस को कई मरतबा रिपीट किया जाता है ताकि क्वालिटी अच्छा, यानी इसको बेहतरीन उसको बनाया जा सके। तो आर्टिस्ट तो इस तरह फिर आर्टिस्ट डिज़ाइन बनाते हैं या उसके ऊपर इमेजों बनाते हैं, उस यानी कि जो मेटल सरफेसेस के ऊपर फिर एक डिज़ाइन बन जाता है। तो ये उसका है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज है इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वन इज यू कैन से एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या चीज़ है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Those substances which can act both as an acid and a base are called amphoteric substances such as water। तो वो substances जो एक्ट करते हैं both as a acid and base उसको कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, यानी जिसमें एसिड और बेस दोनों खसूसियात मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। जैसे कि पानी है, पानी कहीं पे जो है ऐसे एसिड काम करता है, यानी कहीं पे जो है ना वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, दे देता है, और कहीं पे हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है। तो बोथ एज एन एसिड एंड बेस। तो पानी के एम्फोटेरिक हो एक सब्सटेंस है। सो when water is treated with an acid, it acts as a base. Treated with a base, it acts as a acid। यहाँ पर बताया गया है कि जो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है पानी, यहाँ पर वाटर एज ए बेस काम करते हैं, क्योंकि जब हम इसको HCl के साथ मिलाते हैं तो फिर ये बन जाता है क्लोराइड आयन प्लस H3O, यानी कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो इसी तरह इसी पानी को अगर हम बेस के साथ मिला लें, अमोनिया बेस है, तो यहाँ पर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर पानी जो है क्या है, एज ए, यहाँ पर पानी एज ए बेस काम करता है, एज ए बेस, क्योंकि यहाँ पे पानी हाइड्रोजन आयन को रिसीव करता है, यानी HCl से H आयन को रिसीव करता है, और ये फिर बनाता है कॉन्जुगेट एसिड H3O, यानी HCl से हाइड्रोजन को लेकर। तो एक्सेप्टिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, so you can say it is called a base। We have discussed previously theories or of lowry bronsted concept। So according to lowry bronsted concept, those species which can accept proton, this is called a base, which you can say in this case water is accept the proton from HCl, therefore it acts as a base। While in this case, in case of ammonia, water acts as an acid because it gives hydrogen ion to ammonia and produces NH4 plus conjugate acid and conjugate base। So you can say in this case, water gives one H ion to ammonia, produce ammonium ion, while in this case you can say water receives H from HCl। So in this case water gives H ion to NH3, while in this case water receives H ion from HCl। So in both cases you can say water acts as a acid and base, so therefore water is an amphoteric substance।
So next one is self-ionization or autoionization of water. So we can say that electrical conductivity experiments have shown that the pure water is extremely weak electrolyte. So water undergoes self-ionizations to a very small extent. Pure water contains equal number of hydrogen ions and hydroxyl ions. So we can say this is self-ionization of or autoionization of water. So this is water. We can say it ionizes and produces OH ions and H ions. So this is self-ionization of water. So electrical conductivity experiments have shown the pure water is extremely weak electrolyte. So we can say water undergoes self-ionization. यानी वाटर स्मॉलेशन की थोड़ी मिकदार में जाने इसमें self-ionization थोड़ी सी स्मॉल मिकदार में होती है. प्योर वाटर में जो ना H आयन और OH आयन दोनों होते हैं. तो in self-ionization of water or autoionization, two molecules of water produces hydronium ion H3O and hydroxyl ions with the transfer of proton. Pure water contains equal number of hydronium ions and hydroxide ions. The following reaction takes place. So H2O plus you can say H2O, H3O plus OH. The reactions in which water molecule produces ions is called self-ionization or autoionization of water. In order to understand the concept of self-ionization of water, we take one molecule of water and its dissociation at 25 degrees Celsius. This water it ionizes to produce H ion plus OH ions. So we can say the equilibrium expression may be represented as, so this is the self-ionization of water, H plus OH. So Kc will be equal to the product of the concentration of this is the product, so H and OH. The product of this is this one divided by the product of reactant, which is H2O. So Kc will be equal to H ion into OH ions divided by H2O. So the concentration we can say is concentration of water is almost constant, so the above equations may be written as, so we can say Kc if it is taken into this Kc H2 will be equal to H ion into OH2. So in this case we can say Kc into H2 is equal to Kw. In this case Kw will be equal to H ion into OH ions. Kw equal to H into OH. So the mathematical product for H and OH remains constant in water and dilute solutions. The constant temperature, the constant mathematical product is called the ionization constant of water, Kw, and is expressed with the following equation. So you can write the above equation is Kw is equal to H ion into OH ions. Conductivity experiments show that the product of concentration of H and OH ions in pure water is always 1 into 10 to the minus 4 mole per liter of water at 25 degrees Celsius and is called water dissociation constant Kw. So we can say Kw is equal to H ion into OH ions and is the H and OH ion equal to 1 into 10 to the minus 14. So this will be equal to this 14 mole per liter at 25 degrees Celsius.
So you can say that know as we know that the molecule of water produces one H and OH ions and dissociation, therefore we can say that H and OH ion is equal to 1 into 10 minus 10 raised to power minus 4. So when H is equal to OH, so in this case H into H will be equal to 10. So here we have put the value of OH, this one. So because H is equal to H, so this will be H square will be equal to 10 raised to power minus 14 under the root, taking under the root. So in this case H will be equal to 10, 1 into raised to the power 10, 1 into 10 raised to the power minus 7. Because if we are taking under the root of 10 minus 14, we know that under the root is equal to 1 minus under the root, value of under the root is equal to 1 minus 1 divided by 2. So you can say that 1 by 2, 2, 7. So that will be equal to 1 into 10 minus 7. So which is this one. So which is also equal to 1 into raised to 10 raised to the power minus 7. So at 25 degrees Celsius, both H and OH are equal to 1 into 10 raised to the power minus 7. So we can say we know that Kw is equal to H into OH, hence so Kw will be equal to putting the value of H and OH, which is this one, H and OH, so this one. So put these values will be equal to 1 into 10 raised to the power minus 7 multiplied by 1 into raised 10 into 10 raised to the power minus 7. So this will be equal to 1 into 10 raised to the power minus 14. So Kw will be equal to 1 into 10 raised to the power minus 14. So this is the autoionization of water, autodissociation of water. So we will discuss 10.2 the pH and pOH scale in next lecture. So thanks for watching.